Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Urban Life. We are here to revise important questions for upcoming DSSB's Special Educator exam. Okay, so we'll start. Question number 1 is the Rights of Persons with Disabilities Act was enacted in the year. Option 1 2014, option B 2015, option C 2016 और option D 2017. कौन से साल में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था? The answer is year 2016. The Rights of Persons with Disabilities Act was enacted in the year 2016. Moving on to the next question. Which one of the following is not a category of disability under RPWD Act 2016? इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 में नहीं थी? मेंटल इलनेस, सिकल सेल डिसीज, लर्निंग डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस. The answer is learning disability. Learning disability was not covered under RPWD Act 2016. Next question. The term inclusive education means. Inclusive education समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? Teaching all students in special schools, educating children with disabilities in regular schools, creating different syllabi for different students, or educating only gifted students. Inclusive education का मीनिंग इनमें से क्या है? The answer is educating children with disabilities in regular schools. डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी रेगुलर स्कूल में पढ़ाना. Moving on to the next question. Which psychologist developed the hierarchy of needs theory? Hierarchy of needs theory किस psychologist ने बनाई थी? जीन पियाजे, B.F. स्किनर, अब्राहम मास्लो और लेव वाइगोट्स्की. The answer is Abraham Maslow. Moving on to the next question. The main objective of an IEP individualized education program is. IEP का main objective क्या है? Increase class size, standardize all learning, set personalized goals or replace curriculum. The answer is set personalized goals. Personalized goals means एक एक बच्चे के लिए उसके according goals set करना. Moving on to the next question. Which stage of Piaget's theory involves abstract thinking? अमूर्त चिंतन पियाजे थ्योरी के किस स्टेज पर आता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल. The answer is formal operational. Moving on to the next question. What does ADHD stand for? ADHD की फुल फॉर्म क्या होगी? Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Autism Development and Health Disorder, Attention Disorder with Hyper Delays और none of these. इनमें से कोई भी नहीं. ADHD stands for Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Moving on to the next question. Which of the following is a non-verbal learning disability? इनमें से क्या एक non-verbal learning disability है? Dyslexia, dyscalculia, dysprasia और autism. The answer is dysprasia. Dysprasia is a non-verbal learning disability. Moving on to the next question. Which act ensures free and compulsory education for children aged 6 to 14? इनमें से कौन सा एक्ट से फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी गई है 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए? RPWD एक्ट, RTE एक्ट, SSA और UNCRPD. Free and compulsory education is given in RTE Act. Moving on to the next question. What is the ideal student-teacher ratio in inclusive classrooms? Inclusive classrooms में student-teacher ratio क्या होना चाहिए? 60:1, 30:1, 40:1 और 50:1. 60 बच्चों पर एक टीचर, 30 बच्चों पर एक टीचर, 40 बच्चों पर एक टीचर या 50 बच्चों पर एक टीचर. The answer is 30:1.
इंक्लूसिव क्लासरूम्स में जो टीचर स्टूडेंट रेशियो कहा गया है वो है 30:1, मीन्स 30 बच्चों के लिए एक टीचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंक्लूसिव एजुकेशन विच स्ट्रैटेजी इज मोस्ट हेल्पफुल। इंक्लूसिव एजुकेशन में इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सेम टास्क फॉर ऑल, सभी बच्चों को एक जैसा टास्क देना। पनिशमेंट फॉर वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर बच्चों को पनिश करना। पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे एक दूसरे से सीखें। या फिर ग्रुप कॉम्पिटिशन। द आंसर इज पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फोकस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मेन फोकस क्या है। हायर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन और टीचर रिटायरमेंट। द आंसर इज यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान का मेन फोकस है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटेलिजेंस इज नॉट पार्ट ऑफ गार्डनर्स थ्योरी। गार्डनर्स थ्योरी का इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस गार्डनर्स थ्योरी का पार्ट नहीं है। म्यूजिकल, लॉजिकल, आर्टिस्टिक और नेचुरलिस्टिक। द आंसर इज आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग इज टर्म्ड एज। अगर रीडिंग के टर्म्स में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसे हम क्या कहेंगे। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रेजिया। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज dyslexia. If learning disability is in reading, then it is termed as dyslexia. Moving on to the next question, which of these is a principle of UDL, Universal Design for Learning? One method fits all, provide multiple means of engagement, use only auditory material, avoid technology. एक ही मेथड सबके लिए यूज़ करना, बच्चों के लिए एंगेजमेंट के अलग अलग तरीके ढूंढना, सिर्फ ऑडिटरी मटेरियल यूज़ करना या फिर टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। राइटिंग में डिफ़िकल्टी होने पर कौन सी डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और ऑटिज्म। The answer is dysgraphia. If a child has disability in writing, difficulty in writing, then it is termed as dysgraphia. Next question, what is the purpose of assistive technology? Assistive technology का क्या purpose है? To challenge students, students को challenge करना, to replace teachers, teachers को replace करना, to support learning needs को support करना और to increase homework, बच्चों का homework बढ़ा देना। The answer is to support learning needs. Learning needs को support करना। Moving on to the next question. Sign language is primarily used for. Sign language हम किसके लिए यूज़ करते हैं। Visually impaired, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, speech therapy के लिए, hearing impaired और none of these. The answer is hearing impaired. This is a quite easy question. Moving on to the next question. A classroom with students of different abilities is called. एक classroom जिसमें अलग अलग एबिलिटीज़ के बच्चे होंगे उसे हम क्या कहेंगे। स्पेशल क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम, रिमीडियल क्लास और थेरेप्यूटिक यूनिट। The answer is inclusive classroom. A classroom where all the types of students are present, it is known as inclusive classroom. Moving on to the next question. Which of these is a role of a special educator? Special educator का इनमें से क्या एक रोल है। टीच ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स, सिर्फ सामान्य नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना। डिज़ाइन आईईपीज़ बनाना। इग्नोर डिसेबिलिटी को इग्नोर करना। ओनली मॉनिटर अटेंडेंस, सिर्फ अटेंडेंस पर ध्यान देना।
The answer is design IEPs. The role of a special educator is to design IEPs according to the needs of students. Next question. What is the full form of CWSN? CWSN की full form क्या होगी? Children with speech needs, children with special needs, Central Welfare and Schooling Network, or none of the above? The answer is children with special needs. Full form of CWSN is children with special needs. Moving on to the next question. Which teaching method involves breaking learning into small steps? कौन से टीचिंग मेथड में लर्निंग को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ कर किया जाता है? प्ले वे, लेक्चर, टास्क एनालिसिस और डिस्कशन? The answer is task analysis. Next question. The term mainstreaming in education means. Education में mainstreaming का क्या मतलब है? Sending children to boarding schools, बच्चों को boarding schools भेजना. Integrating children with disabilities into regular classrooms, children with disability को regular classroom में भेजना. Involve करना. Giving same exam to all, सभी बच्चों को same exam देना. और starting new curriculum, नए curriculum की शुरुआत करना. The answer is integrating children with disabilities into regular schools. Children with disabilities को regular school में integrate means involve करना. Next question. What is an effective classroom strategy for students with ASD, autism spectrum disorder? Punishment, routine and structure, random seating, or ignoring behaviors? The answer is routine and structure. For ASD students, it is very important to maintain routine and structure. Next question. Hearing impairment refers to hearing impairment का क्या अर्थ है? Total blindness, partial or complete loss of hearing, physical disability or mental illness? This is an easy question. I hope you all know the answer. Hearing impairment means partial or complete loss of hearing. Thanks for watching this video. I hope you guys find this video helpful for you. All the best for your exam.